top court to understand that the next hearing will obviously be in March. But in the meanwhile, these regulations that have been stayed by the top court, we have been seeing growing anger, especially in terms of the protests that have been staged. उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर जो लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी की गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं हो कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। All right, so that's the word coming in from the lawyers as part of this hearing and what exactly was argued. But important to focus on the observations made by the top court. Most importantly, asking, are we losing gains of 75 years? Are we going in the regressive direction? Let me take this back to my colleague Shrishti, who continues to be with us from outside the top court. Important, Shrishti, given the growing anger, given the protests, given the resignations, given the internal dissent, given one straight argument, are you targeting the general category, the non-reserved categories? Is there likely to be a bias against them, given how these committees or how these complaints may function? And given the fact that the top court has also recommended that there be a whole new round of discussion and mull over what has been suggested till now to rework this entire idea to make it more equitable. बहस के दौरान इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भी कहा कि वो लैंग्वेज में भी थोड़ा करेक्शन की ज़रूरत है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही। तो अगर इसकी प्रॉपर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग होगी तो मुझे लगता है जो समानता का हम लोगों का विजन है वो सबके लिए लागू। एक्सपर्ट कमेटी का प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आएगी, यूजीसी लेकर आएगी कि हम क्या करने वाले हैं 19 मार्च? अब ये बात तो 19 मार्च को पता चलेगी कि क्या कैसे आगे मामला बढ़ता है। पर अभी फिलहाल के लिए जो मौजूदा बात है वो ये है कि इंटरिम रिलीफ इस रेगुलेशन को स्टे करने के माध्यम से मिली है। यानी अंतरिम रिलीफ मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई चीज All right, so one thing is clear, the next hearing is on the 19th of March. My colleagues Nalini and Shrishti, who continue to be with us on the broadcast. Shrishti, I apologize. I ask you those questions, but live sound bites that keep coming in as we have to take them. Also with me on the broadcast is my colleague Aishwarya Paliwal. Aishwarya, very important to focus on the observations of the top court, on the message that goes out, on three clear questions that have been asked by the top court. Firstly, no experts to clarify UGC's language. India's unity must reflect in campuses. The fact that are we losing gains of 75 years? Are we going in the regressive direction? Aishwarya. Well, Suisha, this is something that a lot of other political leaders also at the moment are looking at. Let me tell you, if we speak about Samajwadi Party also is very keenly looking at what the Supreme Court has to say. Some other parties like the TMC also at the moment, they are also waiting to get clarity, and now we are seeing some sort of clarity coming in from the Supreme Court. Now, on the back of this, you will see the other political parties now pressurizing the government and speaking with the government also, speaking about telling the government what they think should happen in the UGC. So with regards to that,
some sort of clarity coming in from the Supreme Court. Now we are waiting for the 19th. That's the next date when we will see the Supreme Court continue with this hearing. Political parties also, so let me tell you, are keeping a hawk's eye on what the Supreme Court has to say. Aishwarya, continue talking to us, especially in terms of what your sources tell you of what the government is likely to do next. Of course, clarifying in the top court on this matter is one thing, but the statement that is coming from the Education Minister that there is no scope for any sort of misuse has not been a very satisfying answer for students in campuses to now understand whether there will be a new rounds of discussion, whether there could be a rollback completely, or mulling towards making it work in a direction that is robust. Well, definitely. We are seeing that the statement that actually came in from the minister very, very clear. The minister very clearly said that they are now looking at it. He also went ahead and said that the government is very keenly looking at what exactly needs to be done with regards to the UGC. Now, will it be completely replaced? Do they have a framework in mind? That is something, Suesha, that the government at the moment is mulling upon. And what needs to be done next? The next steps is also such things that we will see coming in from the government. The Education Ministry at the moment only focusing on what they believe is good for the nation and what they believe will help in taking the nation forward. So with regards to all those things, we will see more clarification coming in from the government of India. But yes, the opposition parties, from what I am understanding, Suesha, at the moment, they're also keeping a hawk's eye on what needs to be done and also keeping a hawk's eye on what the Supreme Court's final verdict with regards to UGC will be.